चुट्टमल्ले चुट्टे स्थाने ओ मल्ले चुट्टे स्थाने चुट्टे स्थाने। भाई चाट, मुझे लगता है माइक्रोफोन को कुछ हो गया भाई। इसकी जस्ट लाउडनेस इज गॉन, इट्स गॉन चाट। चुट्टमल्ले चुट्टे स्थाने चुट्टे स्थाने चुट्टे स्थाने। एक सेकंड रुको भाई, एक सेकंड रुक जाओ भाई। वेलकम बैक भाई चैट। कल वी कुडंट ज्वाइन द स्ट्रीम यश के साथ बहुत देर तक, आज वीडियो नहीं रिकॉर्ड पाया, बट वी आर बैक आफ्टर अ क्रेजी सोशल मीडिया। पता नहीं क्या लड़ाइयां, वॉर्स। रोड्रिगो डिपॉल के कमेंट सेक्शन में लोग गालियां लिख रहे हैं रोड्रिगो डिपॉल को, स्ट्रेज, ही इज गेटिंग रैंडम स्ट्रेज। वो तो उसको तो वो इन्वॉल्व भी नहीं था रोड्रिगो डिपॉल, एंड ही इज गेटिंग स्ट्रेज। प्लेयर्स को पिटाइयां पड़ रही हैं, क्या हो रहा है भाई? बैलन डोर टाइम इज लाइक इट्स फ्री एंटरटेनमेंट चैट, इट्स फ्री एंटरटेनमेंट एंड वी आर हेयर फॉर इट एसेंशियली भाई। दिस वाई वी, मतलब कितना ही बेकार समझ लो जिसको, लाइक, क्योंकि इट्स पेटी स्टफ इन द एंड, बट भाई फ्री एंटरटेनमेंट, वी ऑलवेज एंजॉय दिस। आज कोई गेम्स नहीं है तो आई एम गुड आई गेस। एक आध कुछ गेम्स हैं, कोपा डेल रे के गेम स्टार्ट हो रहे हैं, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कुछ कुछ हो रहा है स्टार्ट चार्ट। कल अच्छे गेम्स है, कल मिलान वर्सेस नापोली है चार्ट, मतलब बेसिकली आज है 1:30 बजे, विच इज एन इंटरेस्टिंग गेम। बट चार्ट, वेलकम बैक फॉर नॉट रोड्रिगो। रोड्रिगो क्यों कह रहा था? आई वाज सेइंग फॉर बैलन दोरो स्ट्रीम एंड यूनाइटेड की बात करनी है भाई। आई एम एक्चुअली हैप्पी टेन हाग इज गॉन, आई डोंट नो व्हाई, आई एम नॉट इवन इन्वॉल्वड। चुट्टमल्ले चुट्टे स्थानी। तो भाई चाट क्या बोल रही है? खट्टास भाई, खट्टास फुल। यश आएगा भैया, यश खाना खा रहा है तो आई डोंट नो इफ विल जॉइन ऑन टाइम, क्या सही रहता है। हेलो जॉन्ग, थोड़ा वीक टू बी अ बारसा फैन। भाई हमारा तो ऐसा ऑनेस्टली, बारसा फैंस को क्या, अच्छा क्लासिको और बायर्न, या भाई ट्रू टॉप स्टफ। क्योंकि भाई प्लीज बैलन डोर पे बात मत करना प्लीज। सू भाई, एक सेकंड सू, कम ऑन भाई, मेरे ओपिनियंस नहीं चाहिए क्या तुम्हें? इतना ही प्रेम है क्या हमारे बीच में? कम से कम, कम ऑन चैट, कैन वी नॉट प्रिटेंड दैट वी हैव समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन अस? आर वी नॉट मोर देन जस्ट फ्रेंड्स? विनीशियस के साथ गलत हुआ पर रियल मैड्रिड ने बहुत सॉल्टी रिएक्शन दिया। चौंकी मेरे भाई कैसा है? चौंकी यार, रोड्रिगो को क्या डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है? वो इतना रिस्पेक्टेबल प्लेयर है, इतना अंडररेटेड है, और एक दिन में इतना हिट, वो भी भाई। तो भाई चैट, दिस इज हाउ भाई, इससे पता चलता है कितने तख्ते पलट हो जाते हैं। ओपिनियंस आर ड्रिवन बाय ऑप्टिक्स भाई। एसेंशियली जो नैरेटिव बन गया, अब अलग अलग तरीके के नैरेटिव है। जैसे एक एक नैरेटिव है कि भाई ओ भाई विनीशियस इज अ अगली प्लेयर, ही प्लेज एक एक लैक ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप से, लड़ता है झगड़ता है इस तरीके से वगैरह वगैरह। तो इस वजह से उसको बैलन डोर नहीं मिलना चाहिए। एक तरफ से ये नैरेटिव है, राइट। एक तरफ से ये नैरेटिव है कि भाई रोड्रिगो ने तो छीन लिया बैलन डोर भाई, वो वाइट है, वो ही लिटरली रॉब्ड विनीशियस, कि इट्स लाइक द मोस्ट अनफेयर अवार्ड ऑफ ऑल टाइम। रोड्रिगो सडनली, व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज कि भाई, एक तो तुम दोनों चीजें बात रख सकते हो, लाइक यू कैन एसेंशियली प्ले बोथ नैरेटिव्स, लाइक यू कैन टेक बोथ साइड्स विदाउट लुकिंग लाइक अ वियर्ड बंदा, समझ रहे? तो यू कैन से कि भाई रॉड्री इज नॉट दैट मच ऑफ अ स्क्रब। रॉड्री स्क्रब नहीं है चाट, ये बात समझ रहे हैं ना? रॉड्री इज नॉट जस्ट एनी, भाई मेरे को ये समझ नहीं आता कई बार, लाइक हाउ इज रॉड्री सडनली अ स्क्रब? रॉड्री इज नॉट अ स्क्रब। तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही वो हो गया कि बस, समझ रहे? इस बार यूएफए और फ्रांस फुटबॉल दोनों मिलकर बैलन डोर दे रहे हैं, और यूएफए एंड मैड्रिड का लफड़ा चल रहा है। लफड़े भी चल रहा है ऑफ कोर्स भाई, पॉलिटिक्स आर ऑलवेज देयर, लफड़े हैं। और वो एम्बापे वेंटू वो सब भी है, क्योंकि फ्रांस फुटबॉल को उतना अच्छा वो नहीं मिला, आई थिंक वो भी है। हेलो चौंकी, हाउ आर यू भाई सोम?
us Bayern fans have been the victim of robbing the most. और भाई वो भी हुआ ना, केन को वो अवार्ड नहीं मिला ना भाई. बाय द वे मैंने कल सेरेमनी नहीं देखी, लाइट चली गई थी, फिर मैं सोई गया. लाइक आई कुडंट गेट वॉच द सेरेमनी. मड्रिड रिएक्शन वैलिड और नॉट, भाई इस पे भी बात करनी है. मड्रिड बॉयकॉट वगैरह इस पे भी बात करनी है. इंटरेस्टिंग है कॉन्वर्सेशन वो. आई मेरे को वही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लगा ऑनेस्टली, आउटसाइड ऑफ जस्ट कि अच्छा कौन डिसाइड. वो तो थोड़ा लाइक हमें वहां लाइक बचकानी सी चीज है कि कौन उसको जिताना, कौन सा पोकेमोन अच्छा है. आई थिंक विनी डिडंट विन इट बिकॉज ऑफ नॉन फुटबॉलिंग रीजन. पीपल डोंट लाइक हिज रिएक्शंस ऑन द पिच एंड ऑल फील बैड फॉर हिम. रियली ये भी हो सकता है. ट्रू भाई. आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. ऑब्वियसली आई थिंक ऑब्वियसली वो इन्वॉल्व है. ऑब्वियसली आई थिंक ऑप्टिक्स आर इन्वॉल्व. लाइक वो बैलन डॉर लाइक नैरेटिव्स डू हेल्प, उसमें कोई डाउट नहीं है. बट अनदर थिंग दैट मैटर्स इज कि विनिशियस का ब्राजील जो भी इंटरनेशनल साइड ऑफ द थिंग्स हुई रिसेंटली, दे आर नॉट गुड इनफ भाई. मोन्जियर Good का evening, Chonky. How are you? for joining. I know भाई you are Mr. busy, I but know, brother. But how are you? I am doing great, Mr. Daksh. दिवाली का टाइम है यहाँ इंडिया में, You're एंड आई थिंक आउट इट हैज बीन सो गुड. वो जो हल्की सी दिल्ली की ठंडक इस टाइम पे और हर जगह, दैट it's getting chilly there. यहाँ पे भी यार, it's getting a bit chilly. वहां तो ऑब्वियसली काफी ठंड पड़ती होगी. बट मिस्टर दक्ष, स्ट्रेट ऑफ द बैट, मैंने आपकी स्ट्रीम्स नहीं देखी. Oh no. बट who's your Ballon d'Or winner? Who's your Ballon d'Or winner? I for me it's Vinicius. ठीक है. Do you think it's do you think it's robbed, like कि Rodri जीत गया? It's like वो बहुत कुछ injustice amongst us. Why is it in? It's a debate, man. Like you can make a very good case for why Rodri should win it and why Vinicius should win it and why even Lautaro can win it. You can make a very good case for all three of them, yeah. For True. sure. So So I think तो it's like कि बस ठीक है भाई. Sometimes votes go in your favor, sometimes they won't, sometimes like optics narrative help you. कि अगर वो yeah, कोपा अमेरिका पहले होता बिफोर रियल मैड्रिड वन एवरीथिंग, तो आई थिंक विनीशियस फिर जीत जाता. इट्स बिकॉज वो भी रिसेंटली हुआ इतना. व्हाट हैपेंड लाइक ब्राजील के साथ वो इतना रिसेंटली खेला कि हेल्प्ड कि भाई किसको वोट देना. और स्पेन तभी यूरो जीती जब ब्राजील अच्छा नहीं खेली, तब yeah, स्पेन yeah. यूरो जीत गई. I तो इट think ऑल्सो हेल्प्स. I think मतलब it's more of a thing कि like I'm sure recency does play a part in it. But ठीक है यार, कोई बात नहीं. मतलब congratulations to Rodri यार. You cannot say Rodri doesn't deserve it and all. He's the greatest. In my video today, I said like Rodri will be the modern archetype of like the future DMs. जैसे Neuer defined sweeper keepers ना. द न्यू डीएम, नेक्स्ट जनरेशन डीएम जब ट्रेन करेंगे यंग वालों को या फिर जब स्काउट करेंगे, यू विल लुक फॉर रॉड्री लाइक आर्केटाइप. yeah, he will be the basic archetype you will hunt for, and then ऐसे हम एक DM develop करना and stuff like that. So yeah man, I think you can't really argue with it, right? I think, but for me, आई एग्री. like I said, for me it was Vinicius. I think his performance in the semi-final against Bayern Munich is one of the greatest Champions League performances. Single-handedly you turn the tie. By single-handedly, if you turn the tie away, I'm sorry, it's crazy. And but that's fine. You can ask 20 people, and I think different people will have different reasons to follow it. And of course, if a lot of our answers are coming from bias only, with whatever club we support and stuff, of course, if you don't have a stake, like I personally don't have a stake in हाँ. this. But ठीक है, like you will have Barca fans leaning towards the non-Madrid candidate, and you will have City fans obviously leaning towards Rodri, and you will have Madrid fans obviously leaning towards Vinny. तो ये सारे biases आएंगे, and ये सारे biases हर reporter में भी exist करता है. Why won't they exist, right? बिल्कुल So बिल्कुल. like humans are like we are yeah, I was driven by this. watching Yash ki thing. I think हाँ. was it a stream or a video? I don't remember. But he said something about a El Salvadorian journalist putting हाँ. Vinicius in 10th. Now, of ठीक है. course, and his vote should be counted equally. By he does work in football, and sure, but that's what I'm saying. El Salvador, South American country, he will हाँ. have his biases against Brazilians, right? Or Vinicius anyway, and He that's also had completely fine. Cruz But this is second how पे. it is, huh? शायद वही सेम जर्नलिस्ट had Cruz second पे.
Yeah, so and that's what I'm saying. It The thing is, it's not like दो ही लोगों के biases और दोनों biases Vinicius के against गए हैं. Some people will be हम्म, biased against Rodri as well. Brazilian journalists will not vote for Rodri. They'll try and put him as niche as possible, right? हाँ बिल्कुल, हाँ ऑब्वियसली लगता है कि उसको हाँ, कम तो पॉइंट। मतलब हर जगह biases हैं, and that's fine. It's just popular perceptions पे Rodri was the favorite, and so he ended up winning. The only thing I didn't like, by the way, was them boycotting the ceremony. I हाँ think भाई they वो shouldn't तो, have done that. But बट I फिर ये भी also था know लाइक, why they do it. मैंने तो, हाँ एग्जैक्टली क्योंकि मैंने तो देखी नहीं थी लाइक व्हेन इट वाज हैपनिंग यस वो, बट जो स्क्रीनशॉट्स ट्विटर पे वायरल हो रहे थे लाइक दे वर शोइंग ऐसे लिटिल ट्विटर एडिटेड फोटोज, Hmm. ये सब लाइक, तो वो भी थोड़ा आई थिंक वो ज्यादा इट्स लाइक व्हाई आर यू डूइंग Yeah. लाइक, एक प्रोफेशनल सेटिंग में उसकी कोई पॉइंट है नहीं लाइक मीम्स Yeah. और ये सब। Yeah. तो आई मे बी वो अंडरस्टैंड करता हूँ, पर पता है एक एक बहुत अच्छा केस है, इट्स लाइक कि मेसी और रोनाल्डो जब दे वर प्लेइंग एंड दे वर विनिंग बैलन डॉर्स, तो भाई दे वर वाचिंग ईच अदर विन, एक के बाद अगला, एक के बाद अगला, एक के बाद अगला, एंड दे वर स्टिल अटेंडिंग द सेरेमनीज। इट वाज नॉट लाइक कि भाई समझ Hmm. लाइक, और दे Hmm. वर विनिंग द, दे वर द मोस्ट लाइक, इन्हीं के पूरा कॉन्वर्सेशन वाज कि मेसी वर्सेस रोनाल्डो, एंड दे वुड स्टिल शो अप एवरी सेरेमनी, हर साल जब Hmm. हारते थे तब भी भाई। Hmm. आई रिमेम्बर मेसी फिफ्थ था या कब था, लाइक फिफ्थ भी था एक बार मेसी Mhm. बैलन डोर रैंकिंग्स में, शायद जिस साल मॉडरिच जीता था उस साल, एंड दे Hmm. वर स्टिल देयर, लेके जाते थे ये, ऐसा इतना इतना हुआ कभी नहीं बना आज तक जितना इस बार बना है ना कि भाई बैलन डोर नहीं हो गया क्या हो गया लाइक, ऑब्वियसly I बैलन think डोर इज ग्रेट that's बट also, एक चीज होती है. First of all, I think the Messi Ronaldo situation also has the fact it's Barcelona and Real Madrid. Like you call institutional हाँ ट्रू, clubs. The thing with when it comes to theory of power in हाँ terms of at least geopolitics, status quo states do not like revisionist states coming up, or yep, they choose not to acknowledge them, or they try to show their place. I think, look man, ये जो boycott हुआ है ना, हाँ I think it's a way of like, I don't like, again this is all guess ना, मैं किसी पे aspersion डाल रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, but it's basically sort of showing like we are the others, we are an institution, हम्म, and by them not attending it, you put वी the डोंट entire एक्नॉलेज इट, sort of thing in, like discredit कर देते हो sort of, right? Like, okay, हम्म, it's not worth कि attending हम this. तो, यप 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 यप, Look, one thing, and I was thinking about this yesterday, and I hate the fact that no new thing verbalized it properly. One of हम्म, one of Madrid's biggest recruitment selling points is Ballon हाँ d'Or. ठीक हाँ है? ऑफ कोर्स कि तुम लाइक उस रेस में हो, You यप become primed to win the Ballon d'Or. What is the यप यप, conversation around Trent right now? If Trent wants to win the Ballon d'Or, has हम्म, to go to Madrid for the PR हम्म, forever, for whatever it is. ठीक है? हम्म, Now suddenly, if you take that away from them, if हम्म, it becomes okay to not give, let's say, or not, again, this is not true, but this is just a theory that it's in my head and could be a shit theory anyway. But if it eventually becomes normalized about not getting the Ballon d'Or, हम्म, then it hurts the recruitment as well. Okay? And so it's how institutions deal with stuff anyway. Like, and you see this with individuals and celebrities also, where ये बंदा Grammys पे नहीं जाएगा. I don't consider the Grammys big enough because one artist got snubbed इतने साल पहले. या फिर remember Kanye West pissing on the Grammys. हाँ हाँ हाँ, These are legitimate things to do to discredit awards and stuff like that. So मतलब it could be one of those things कि हमने boycott की, because I don't really see a good reason to boycott, because like you हाँ, said, they've done this in the past with Messi, but I वही, think उस scenario में they were two institutional clubs. There is respect between two Spanish giants. They चलो are ठीक है, competitors and stuff like that, so maybe they do it. So yeah, I personally think that, I mean, they shouldn't have boycotted it, but ठीक है. बट ये भी है ना कि लाइक, चलो एक कॉन्वर्सेशन है कि विनिशियस को बैलन डोर नहीं मिला, पर फिर लाइक वेयर डिड कारवाहल फिनिश, कारवाहल भी अच्छी पोजीशन पे फिनिश किया, देयर वर अदर प्लेयर्स एज वेल, बेलिंगम भी था Who was it? इन द रेस, It was Rodri first, Vinicius second, Jude सेकंड, third, थर्ड, fourth. Who was fourth? फोर्थ, One.
चार्ट आई बताना थिंक फोर्थ। फोर्थ फोर्थ कौन था? पता नहीं कौन था, फिफ्थ आई थिंक अम्बापे था या हालैंड था, फिफ्थ हालैंड था आई थिंक, सिक्स्थ फिफ्थ अम्बापे था। हालैंड था, सिक्स्थ एम्बापे था, हाँ। फोर्थ सेवेंथ कौन था? कारवाल वाज कारवाहाल ही था फोर्थ। भाई, ओके। कारवाल फोर्थ। या सो या आई थिंक वियर्ड वियर्ड। आई एवरीवन थिंक इन लाइक he डिसेंट should have पोजीशन। like वो वाली चीज भी थी ना कि लाइक अगर जातो कि इट्स टीम पूरा, बट अगेन भाई इट्स लाइक अगर पेरेज इन्वॉल्वड है और फिर वो सुपर लीग यूरोप वो यूएफए वाला सीन भी, आई एम प्रीटी श्योर वो लाइक दे इट प्लेज अ पार्ट, वो सारी पॉलिटिक्स वगैरह। अभी उनका एक फॉर्मर प्रेसिडेंट, I don't remember his name. He came out and said they shouldn't have done it. I also agree with him. It's a big club sort of thing, you know. Like you shouldn't let these things be the one. Hmm. As a Madrid fan, one thing I don't like about Madrid player is that calling politics undeserving Ballon d'Or lost credibility. That's disrespect to winner. ट्रू, ये भी सही बात है। लाइक ये बोलना कि भाई ये गर्व खराब है, इट्स लाइक तुमने तो सारे पिछले भी जितने जीते वो भी लाइक एवरीथिंग्स डिस्क्रेडिटेड, फिर लाइक Hmm. व्हाई इज एंड व्हाई कोई भी अवार्ड सही क्यों है? लाइक come on man, he was destined to win. Reports were there for from days. How in the hell in 7 hours everything was changed? It has to be with UEFA and Madrid. And how do you expect them to attend the show? I don't think it was like a personal grudge जो यूएफए ने बोला अब मैं तेरे पे निकालता हूँ. If that was the grudge, भाई they can screw over Madrid तीन in प्लेयर, so many सेकंड ways. थर्ड फोर्थ मड्रिड प्लेयर्स फिनिश थे। क्रूज भी आई एम प्रीटी श्योर कहीं था, टॉप 10 या कहीं पे तो था। First of all, it's not UEFA's voting; it's journalists worldwide, whatever stuff like that. But हम्म। also, if UEFA want to screw Madrid over, they can screw them in so many ways in terms of scheduling of matches, in terms of हाँ pots, ट्रू ट्रू। AI pots decide हाँ कर रहा है एग्जैक्टली, को चैंपियंस कहाँ लीग पे मड्रिड आ के. रही है, हाँ तो फिर मैन सिटी बायर्न और ऐसे ऐसे दे दे के लो भाई, आर्सेनल तीन ठीक है, करो भाई। करो करो. ट्रू। They can screw, and let's not forget, प्रणय ने भी सही कहा है, like City and UEFA have had a legal battle where UEFA ended up banning City. फिर उनको कैश हाँ जाके punishment reduce ट्रू। करनी पड़ी. So इट्स नॉट लाइक कि सिटी कोई yeah, बहुत वो it's उनके not a साथ अच्छे cozy से लड़। cozy kind of thing. हाँ ट्रू 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 ट्रू। रेयर चौंकी भाई, मैंने तो कुछ अभी बोला भी नहीं। मैंने तो अभी कुछ ओपिनियन दिया ही नहीं। चौकी हो गया। चौकी टॉक अबाउट बारसा प्रोबेबल जनवरी साइनिंग, भाई कुछ साइन नहीं करने वाले। जो चल रहा है चलने दो, बच्चों को खिलाओ, क्या मतलब एक तो ये अभी से Hmm. साइनिंग क्यों? रियल मैड्रिड ने और अवार्ड्स भी जीते थे पर उन्हें कभी भी शो नहीं किया बिकॉज ऑफ यूएफए। उन्हें कभी भी शो नहीं किया बिकॉज ऑफ यूएफए। अच्छा वो बाकी सारे अवार्ड्स भी होते हैं ना, लाइक बेस्ट टीम या फिर बेस्ट कोई आया ही नहीं था लेने. कैटेगरीज वगैरह। हाँ ट्रू, अब ये भी है। When he said on Twitter that he will work 10 times harder if he have to. Good man. Good भाई for गुड फॉर him. हिम, गुड फॉर हिम। बट पता है मेरे को सबसे बुरा लगा जेन्युइनली रॉड्री के लिए। रॉड्री को एकदम सडनली ही हैज बिकम अ स्क्रब। एवरीबॉडी सेइंग अब उसको ओ भाई Yeah, की से yeah. डबल पिवट चाहिए, तीन एंगल, कम ऑन। कभी आज तक बात नहीं हुई भाई। नो प्लेयर इन द वर्ल्ड कैन प्ले कि उसको घटिया जगह डाल दो और वो कर दे। नो प्लेयर इन द वर्ल्ड डिड इट। Yeah, yeah. ये जो कौन बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है It's ऑन। it and like I'm surprised you're surprised. This happens to any player on the up and coming. Like this will happen to ओ पामर, अभी उसको इतनी स्पेस मिल रही है तो पामर इतना अच्छा नहीं कर रहा है. वन डे ही गेट्स हाँ डबल ट्रू ट्रू टीम्ड, ट्रू। अब उसको पता हाँ चल ट्रू। जाएगा. ठीक है. साका के साथ होता है, उसने 7 गेम में 7 असिस्ट दे दिए, बट देखो कितने कॉर्नर थे, कॉर्नर 2 ही थे. But then you're started to like, then you'll pick out anything to discredit it, right? You भाई can फिर तो nitpick pretty ट्रू much ट्रू। anything. वही Rodri only works when he is receiving the ball from the defense and passing it forward. Easiest job मतलब in फिर तो the कुछ भी होता है world. एग्जैक्टली। हालैंड स्कोर्स गोल क्योंकि उसे स्ट्राइकर खिलाता है। लाइक प्ले हिम एट विंग, प्ले उसको विंग्स पे खिला, फिर देखते हैं कि तो भाई अब ये दिस इज अ वियर्ड कन्वर्सेशन, पहले कभी नहीं Yeah, होती थी। it's just nitpicking for the nitpicking, man. बहुत क्रेजी हुआ है। डज दैट मीन ही विल बी सेकंड रैंक्ड इन 10 मोर सेरेमनीज? कौन? What? Vinicius? Okay, I think what he's trying to ask us, do you think Vinicius can ever win the Ballon d'Or? I think one of the arguments is that this was, maybe it's not in terms of pure output, it wasn't हाँ the best season by a striker, of course, but that's never going to happen. Messi level का तो कभी नहीं आने वाला. हाँ ट्रू ट्रू ट्रू। Um, but this was a season where he was very, very clutch, like super important for Real Madrid. ट्रू। If after this performance he cannot win, then he'll never win. Do you think he'll, like, he'll work आई 10 डोंट। times that hard? Okay,
If I have to ask you, ki, why हाँ, did Vinicius miss out? Was it something he did not do as good as Rodri? If is it something like that, तो फिर उसको क्या करना चाहिए करने के लिए? आई थिंक अगर बिल्कुल, अब ये भी अगेन दिस इज ऑल्सो थोड़ा नेट पिकिंग वगैरह, बट क्योंकि वो 4 महीने पहले इंजर्ड था, फिर उसके बाद वो सेकंड हाफ ऑफ द सीजन से इज वेयर विनिशियस स्टार्ट्स टू गेट आउटपुट और शोज अप इन द गेम। फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन उसका भी बहुत अच्छा नहीं था, और लीग में तो यू कैन मेक अ केस कि बेलिंगम वाज द वन, जो कि लीग में तो भाई बेलिंगम ने करा है, लाइक इन टर्म्स ऑफ आउट, क्योंकि इन द एंड यू नीड ऐसे सस्टेन्ड आउटपुट लीग जीतने के लिए। यू कांट जस्ट की Hmm. 4 गेम्स अच्छे खेलने हैं, यू नीड टू विन एवरी सिंगल गेम, बार 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 बार। मे बी दैट्स द केस। रॉड्री Yeah. का के रॉड्री को ये सपोर्ट कर रहा था भाई, ही लिटरली प्लेड कितने गेम्स पिछले सीजन से लेकर अब तक भाई, एक कुछ गायब नहीं, हर गेम खेलता था, Hmm. भयंकर उसका लाइक अवेलेबिलिटी थी रॉड्री की। मे बी दैट्स व्हाट हेल्प्ड हिम। और ऑब्वियसली मेरे हिसाब से तो इट्स मोर अबाउट वो जो भी इंटरनेशनल सीन में हो, क्योंकि यूरोज जीते एकदम टाइमिंग लिटरली, सबसे रीसेंट बिग कंपटीशन वाज यूरोज, दैट्स व्हाट Hmm. स्पेन वन। और फिर Yeah. स्पेन भी तो ये चाहती थी, लुइस दे ला फुएंते, उसका बेस्ट प्लेयर फाबियन रुइज, लमीन यमाल, ये सब बंदे, वो कह रहे कि रॉड्री को बैलन डोर दो। अब समझो लाइक स्पेन Hmm. खुद वाज थोड़ा सेटिंग देमसेल्व्स कि भाई दिस इज द गाय दैट कैन विन। और ऑब्वियसली स्पेन को बेनिफिट है, इफ रॉड्री हैज द बिगेस्ट चांस, स्पेन का प्लेयर जीतेगा, तो इट्स लाइक Yeah, yeah, बेटर, for sure. बेटर फॉर देम। But I think we Rodri winning it is such a huge moment because after such a long time, a Spanish हम्म, person's won the Ballon d'Or. ट्रू, But I think the biggest thing is, and I said this in my video, it's the perfect culmination. I'm not even saying it's the end of it, but this is like such a crowning moment for the entire City project, right? हम्म, As a team, you've ट्रू, made like the best winning machine possible. 5, 6 seasons in a बिल्कुल। row, you won all that stuff. Sorry, दे हैव 4 seasons वन, in a row, you won. Fifth अभी मतलब जीत दे, जाओगे. बिल्कुल वो चेल्सी के बाद आए हैं सिटी, दे हैव वन चैंपियंस लीग एज वेल अभी एक, हाँ, एंड दे हैव एक हो आल्सो गया. गॉटन अ बैलन डोर वाला प्लेयर। सिटी के लिए And now दिस इज they've got exactly. इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, लाइक उनकी लेगेसी व्हाट दे हैव ट्राइड टू बिल्ड भाई, मजाक भी नहीं है। इट हाँ. प्रीमियर लीग सीन में तो इट्स लाइक चेंजिंग थिंग्स। चौंकी माय मैन एम्बापे, पता है वैसे ये सही पॉइंट है। आई थिंक द ओनली थिंग दैट माइट स्टॉप विनीशियस फ्रॉम विनिंग, क्योंकि लाइक अगर वो इस पिछले साल हो सकता था लाइक पोडियम में, तो आगे भी हो सकता है। इट्स लाइक थोड़ा लक चाहिए, थोड़ा जीतना है, थिंग्स गो योर वे, तो यू कैन बी देयर। बट आई थिंक जो वो फैक्टर जो सबसे ज्यादा सब्जेक्ट करेगा इसकी, उसकी टीम में अब एम्बापे भी है एंड बेलिंगम भी है। वी डोंट नो इस सीजन लाइक बेलिंगम का ऐसा कुछ जान नहीं रहा अच्छा, लेकिन लाइक ही विल बी देयर एज एज लाइक इट गोज ऑन, क्योंकि इंग्लैंड भी Yeah. जीतेगी। ही आल्सो प्लेस फॉर इंग्लैंड और वो अच्छा खेलता है इंग्लैंड के लिए। तो अब विनिशियस के साथ उसी की टीम में दो और बंदे जो बैलन डोर के लिए लड़ेंगे। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट वो चीज कि भाई क्या करेगा। Hmm. और ये भी इंटरेस्टिंग है लाइक बेलिंगम और वो उन्होंने कुछ नहीं पोस्ट करा एम्बापे बेलिंगम ने। अब ये शायद मैं ज्यादा कॉन्स्पिरेसी टिन फॉइल So हैट। there's this city page that posted, okay? Wait, I'll show you. Hold हाँ, on. दिखाओ। So there's this city page that posted. Where is this way? Yeah. इफ वर्ल्ड कप और यूरोस को प्रेफरेंस मिलती है बैलन डोर में, तो क्लब फुटबॉल के पास तो 2 साल का ही विंडो है। हालांड तो सोचेगा वर्ल्ड कप वाले साल नहीं करूंगा, पर फॉर नेक्स्ट ईयर करूंगा। नहीं ना, बट प्लेयर्स डू नॉट जस्ट प्ले फॉर लाइक बैलन डोर के लिए थोड़ी खेल रहे हैं, उनको पैसे मिल रहा है Can you भाई। see this? Yeah. यस आई कैन। Basically, this city page posted this. Ki Perez हाँ, told Real Madrid to promote this. Mbappe, Bellingham claim their social media ain't working. As like, how does a news agency know this? So I हाँ clicked on ऑब्वियसली। this. Now, भाई अमिताभ बच्चन और पता नहीं क्या हो रहा है, पार्टी चालू है। look at this. टाटा स्काई, मुंबई, गुड़गांव, बैंगलोर, दिस इज सम गाय, दिस इज बेसिकली मी, दिस इज बेसिकली मी। This is मैं basically अपना बना, you. They're talking about एग्जैक्टली Randeep Hooda, talking about muesli, or Chitrangada Singh launching Ola in Mumbai. Bhai, मतलब I was like, I genuinely just clicked thinking, like, how does a news agency, what if they said, let me read what is their source? ठीक वही है? सोर्स दुबई डोर भाई, ये दिस इज अस, दिस इज हम वी आर द सोर्स। भाई ये तो रिप्रेजेंटेशन होगी, मजाक नहीं। चौंकी का ही अकाउंट है ये तो भाई, एग्जैक्टली भाई मैं ही बैठा हूँ यहीं से, मैं ही कर रहा हूँ। Ballon d'Or will lose its credibility in the coming years. The end has begun. भाई I think this is ये apocalyptic वो Hmm. करना है इतना कुछ। I don't think so it's that deep. What if कार्वाहाल का what if like सीन, Madrid start their own award show with another magazine? maybe that's the next step.
उसको बुलाएंगे और दो चार क्लब्स को, और कि हमारे प्लेयर्स और कोचेस सारे बिग क्लब्स मिलके हम वोट करते हैं, और फिर हाँ, कर देंगे सुपर डे, और they'll हाँ, make it they'll call it like something like, let's say they call it like Golden Shield हाँ, or कुछ बना something देंगे। like that, and instead of journalists, they'll invite all clubs, आई managers थिंक to vote and stuff like that. इट्स इट्स द फैक्ट, इट्स वही वाली चीज, कैन रियल मैड्रिड लूज देयर शाइन, कैन बार्सिलोना लूज देयर शाइन? इट्स दे कैन, मतलब इफ गिवन लॉन्ग इनफ पीरियड ऑफ टाइम और सब बेकार उतर है, बट इट्स एक्सट्रीमली हार्ड, और वो क्योंकि इतनी बड़ी लेगेसी है। बैलन डोर भाई कौन कौन जीता है, बैलन Mm. डोर पे जिन बंदों के, इट्स यू कांट मेस विद इट, द जिन लोगों को बैलन डोर मिलता है भाई, इट्स द गेम इज डिफरेंट। Yeah, yeah, तो वो for आई sure. थिंक इट विल नेवर हैपन, लाइक इवन इफ दे ट्राई आई थिंक दे विल फेल। सुपर Mm. लीग ऐसे पता नहीं, लाइक इट्स लाइक सुपर लीग फेल्ड, राइट? सुपर लीग वो कर नहीं पाए। यूएफए ने बोला ले हम दिखाते सुपर लीग, उन्होंने बढ़िया लीग्स पता नहीं क्या, अब देखो। I think they shouldn't do anything. The reason I was so surprised about them boycotting it, take, let's say even if Rodri wins it this season, he's not going to win the next Ballon d'Or. Obviously, he's out with an ACL. हाँ, ट्रू ट्रू ट्रू। And I think if Madrid have a Madrid-like season, of course there will be some Barca players whose contention में होंगे Lewandowski Ballon d'Or. भाई इनफैक्ट तीनों के तीनों पोजीशन लो भाई, गो फॉर ऑल द Rafinha थ्री and पोजीशन। Lewandowski winning एग्जैक्टली भाई। Ballon d'Or. But yeah, basically this season though the previous one is not gonna be there. So it's a good chance to win it, man, next season. बिल्कुल। Messi was Huggo in international tournament for Argentina, but they forget how much numbers Messi produce in current generation. I can only say Mbappe। वही exactly वही फर्क है भाई, numbers का एक तो बहुत फर्क है, like, और it plays। मे बी लेवेंडोस्की था, लेवेंडोस्की के दो बार या एक बार, दो बार था ना वो, एक तो लाइक कैंसिल उस हो गया था सीजन ना में। कोविड टाइम एक पे। तो कैंसिल ही हो गया, हाँ, जिस बार जिसमें सबसे बड़ा शॉट था, उसके बाद मेसी कोपा अमेरिका जीत गया। तो भाई दिस इज स्केरी, बट भाई मिस्टर दक्ष, अनदर थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट भाई, यूनाइटेड आर दे सीरियस? उन्होंने साइन कर भी लिया रूबन अमोरिन, वो उसने लीव Yesterday कर दिया, sacked, today done. डन। भाई आर दे कॉम्पिटेंट समहाउ, आर दे बैक? Tell me if this sounds familiar. A young manager from a foreign league has won and dominated that foreign league, has now been Yeah, hired by Manchester United to play exciting football. Am I भाई talking about Amorim or am I talking about Ten Hag? टेनहाग भाई बस बॉल्ड नहीं है Oh yeah, it's अमोरिम। look. No, he's a good manager, man. Jokes aside, I was not happy when they signed Amorim. भाई Uh, अमोरिम वाज लिंक्ड विद चेल्सी एज वेल, आई रिमेंबर, लाइक Chelsea चेल्सी वाज। and then City. भाई फिर देयर माइट बी, अब मैंने देखा नहीं इतना, बट But देयर he's माइट a बी सम good guy. ट्रुथ टू हिम। He's 39 years old and he's a very modern sort of manager who he's got some really good tactical. He plays in a back three, which is interesting with Maguire by the very interesting with Maguire being there and Delict being there and sub like डिलीट। all of those people. Um, plays direct, plays vertical. भाई मतलब built for United, but अभी के लिए I feel like United squad is not got the players, all the players to play his system. There is the probably like just enough to play 11, but not enough to like fill the depth. So देखना पड़ेगा यार, मतलब वो 3-4-3 या 3-4-2-1 टाइप्स खेलता है। अब कैसे मैनेज करेगा वो उस पे ही है। बट या इट्स अ वेरी रैपिड अपॉइंटमेंट मैन, एंड आई डोंट थिंक स्पोर्टिंग फैंस विल बी हैप्पी बिकॉज एंड ऑफ लास्ट सीजन पे he told sporting fans that you know um, people are saying that sporting can never win back to back seasons. We'll see, and it's never been done in the Portuguese league since 50s or 60s that any team has won the Portuguese league back to back. He was on track. He's played 9 games, 27 फर्स्ट points. में। हाँ, यप first यप में यप। 9 games, 27 points, 30 goals सारी scored. विंस, सारी विंस, दे हैव वन सारे ऑल wins द हैं. गेम्स। 30 goals scored, 2 conceded. भाई लास्ट ईयर दे वन द लीग बाय अ 10 पॉइंट गैप, Yeah. 10 पॉइंट के गैप से। You दैट can इज judge डोमिनेशन। how good he is with the fact that Benfica and Porto fans are celebrating he's leaving. मेसी भाई वाज ही कुकिंग, देखना पड़ेगा चार्ट भाई, इस पे वीडियो बनानी पड़ेगी, ये तो Yeah. बढ़िया बंदा लग रहा है। He's a pretty competent dude. But so yeah, it's like I asked Mohak also yesterday. The only issue I have with is I just wonder if it's too big a job for him.
Hmm. because yes, he was done with. मतलब he was linked with Liverpool, Chelsea, Hmm. and uh, abhi City since their sporting director came over. Hmm. Um, but he's also linked with West Ham at some point of time. He's a very ambitious dude. That's all I'll say. He's a very, very ambitious dude. So yeah, let's see, man. Portuguese sporting to Manchester United abhi tak has never failed. Cristiano Ronaldo and Bruno Fernandes. Maybe this could be the latest iteration. And they Hmm. already have a plan to win the league in 2028. That's what their CEO said. So let's see. Maybe they take a long What? term view. यूनाइटेड के सीईओ ने बोला था कि हम 2028 में लीग जीतना चाहते हैं Yes. 4 साल में. वैसे दैट्स लॉन्ग इनफ टाइम फुटबॉल He वर्ल्ड में तो आई might be in the थिंक. dugout versus Chelsea, by the way, at the weekend. हाँ, क्योंकि वो कह रहे हैं लाइक वैन निस्टेलरॉय भी वो लीव कर रहा है ऑलरेडी, लाइक दे आर Yeah, सेइंग वो yeah, हाँ he's वो about जा to रहा go. So he'll probably just take charge versus Leicester, जो कल है, है. and then Amorim will probably take over after that. सो वाज टेन हाग भाई. ट्विटर पे ये भी आ रहा था लाइक कि टेन हाग ने, क्योंकि दे प्लेड देम शायद यूरोपा लीग या कहीं पे, एंड देन दे स्लैप्ड देम बेसिकली स्पोर्टिंग को रूबन आमोरिम की, एंड नाउ दे आर साइनिंग लाइक टेन हाग इतना बेकार कर रहा है यूनाइटेड में कि Ajax दे आर वाला, सैकिंग हिम. Ajax के हाँ, time पे. यस. Okay. यस. टेन हाग विद आयाक्स स्लैप्ड इसकी स्पोर्टिंग Yeah, yeah, yeah. आमोरिम की. तो ये सीन भी चल रहा है, बट इट विल बी इंटरेस्टिंग. मेरे को वैसे टेन हाग के साथ इट इट हैज बीन अ थोड़े क्या कहते हैं उसको, सच्चाई का सामना करने वाली चीज, बिकॉज आई आई कुडंट बी भाई कि कैसे कोई इतना बेकार मैं लाइक मैं उसके पहले सीजन के बाद आई वाज नॉट लाइक दिस कि इतना बेकार कैसे हो सकता है भाई ये बंदा. इट वाजंट पॉसिबल. Let's see, बट man, how अगेन. this goes. I think they'll need to recruit players because back three they have players for a back three. I don't think they have a player. They have players for the middle two. I mean, they can play Ugarte, who worked under him before. Ugarte and उगारते और Casemiro can probably switch, and then दूसरा he plays in a way कि उनका जो midfield है, one will stay deep, one will shuttle. So they need हम्म. somebody with legs like that. And the 3-4-3 में जो front three है, two of them are हम्म. creators, one is a pure striker. चलो pure striker तो वो हॉलैंड को बना देगा ग्योकरेस जैसे, best case scenario. But the two भाई creators are an issue. One could be Xerxes, other one probably Garnacho. Let's see. But yeah, they have players to play an 11 of Ruben Amorim style. But abhi ke liye na, I think United fans just want to see some good football, like some bloody good football. That's it. हाँ ट्रू भाई. जस्ट प्ले गुड लाइक थोड़े दिन तो वही करो Yeah. भाई. कहाँ एंड टाइम मैड्रिड हो गया भाई. एक सेकंड भाई, ये व्हाट इज गोइंग ऑन. Mr. Chonky and Mr. Daksh, yesterday I felt bad for Graham Hansen. I saw sadness in her eyes. I think she deserved more than Bournemouth. भाई I पता है agree. क्योंकि Graham Hansen is also easily one of the best players in the world. But Yeah, yeah. she's also वो भी 2-3 Ballon d'Or winners के साथ खेल रही है. It's like she also might never get वो But भी this Vinicius season वाली she सीन है. deserved it, man. She's been True. crazy good. Champions League में especially भाई it was crazy. उस भाई again और आइताना ने दूसरा Ballon d'Or जीता है if I'm correct. उसका Back to दूसरा back. Ballon d'Or है. Back to back भाई crazy. But yes, Graham Hansen is also incredible Hmm. player. हर पीआर इज बैड. विली बैलन डोर पे आया था भाई. व्हाट द हेक. हाँ, पता नहीं, वैसा मैंने देखा ही नहीं वो लाइव, तो आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या हुआ था. Manchester पीछे United से आया move for Ruben Amorim could be delayed by his notice period. था. आई Corporate Mazduri is alive कॉर्पोरेट हो and गया. वही kicking. केस डाल दो भाई, केस डाल दो. कर दे लीव. व्हिच इज फनी They're भाई. paying दिस 10 इज million for him, by the way, apparently. कितना लाइक हाउ एक्सपेंसिव इज 10 million एक्सपेंसिव फॉर अ कोच. I would say so. इट इज. यूजुअली मैं कभी हेयर लाइक आई नेवर गेट टू हेयर कि कोच कितने में गया. लाइक इट्स अ कॉन्वर्सेशन दैट नेवर पॉप्स अप, पता नहीं क्यों. Think they combined spent like 22 million or 25 million euros on Ten Hag firing and Amorim hiring. दैट्स क्रेजी. Hmm. अरे वो स्पीड था, विनी नहीं था. अच्छा भाई, एक तो स्पीड. एक सेकंड भाई, व्हाई आर वी नॉट इनवाइटेड. Do स्पीड तो you pull सीरियस भी नहीं in? है फुटबॉल को Do लेके. you pull in millions of viewers? भाई चैट Do you करा दो यार. bark at random street dogs? कर देंगे. वी कैन वी कैन डू अ डॉग कैचर स्ट्रीम भाई. चैट, व्हाट डू यू थिंक Oh अबाउट man. दैट. If any Barca player had the same stats and trophies like Vinicius and then lost to Rodri in this manner, nobody would be saying the same. Bhai, we have had Messi
एब्सोल्युटली डिवॉर विनिशियस इन स्टार्ट्स, ओवरऑल प्ले, हर डायमेंशन में बेटर फुटबॉलर, एंड स्टिल नॉट विन द बैलन डोर. एंड आई एम ऑफ दोज इल्क जो मानते हैं कि मेसी से बेटर प्लेयर मैंने देखा नहीं आता. लाइक आई थिंक मेसी शुड हैव गॉटन द बैलन डोर एवरी ईयर. दैट्स व्हाट आई फील अबाउट कि लाइक हाउ गुड मेसी वाज. तो इट्स लाइक कि इसमें क्राइंग वगैरह कुछ पॉइंट है नहीं. लाइक दिस इज हाउ बैलन डोर वर्क्स. नैरेटिव्स, ऑप्टिक्स, कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा, टाइमिंग्स ऑफ व्हेन यू विन, दिस इज व्हाट Hmm. मैटर्स एसेंशियली. एंड ऑल्सो एक और चीज मैटर करती है भाई. आई थिंक वो ऑफ द फील्ड और एंटिक्स और ये लड़ाइयाँ, हाउ यू लुक, क्योंकि एसेंशियली PR. प्लेयर्स रिस्पेक्ट करते हैं, लाइक वो जर्नलिस्ट स्पेशली, उनकी रिस्पेक्ट फिर तुम्हारे लिए अलग है. एंड दैट डजंट सूट विनिशियस का केस. Being great at Ajax is not the same thing as being great at Sporting. Amorim turned a laughing stock into a monster in 4 seasons. Ten Hag didn't do that. But I remember like Ajax ten. Wait, Ajax wali. Sorry, Ten Hag wali Ajax Semi-finals गए was थे ना? also. वही exactly Champions League semi-finals खेल रही थी. They beat Madrid. They beat Juventus. They weren't a just as like कि बहुत अच्छी टीम नहीं थी उनसे पहले. तो ऐसा है नहीं. Hmm. बट इंटरेस्टिंग चीजें चल रही है फुटबॉल जगत में. और क्या चल रहा है? और तो कुछ लड़ाई झगड़े कुछ. Tell me this. I'm so surprised. हम्म. Artem Dovbyk was in like top 30. Good player, of course. हाँ, Why no Salah? But how is Salah एग्जैक्टली. missing out on all these things? साला भी मिस आउट कर रहा है, और साला भाई हैड लाइक 20 प्लस गोल्स, भाई इफ आई साला रिमेंबर. has a career season almost every season भाई मतलब and वही साला एग्जैक्टली. भी off field कितना मतलब he's a top guy. It's just I don't know man. Like I think Salah also knows कि कभी कभी like कभी भी he's not gonna win it. But because they're not even putting him in like top 30 भाई. भाई दैट्स इनसेन एक्चुअली. वही. और साला इजीली टॉप 10-15 प्लेयर है वर्ल्ड का. टॉप 10-15 कभी भी, लाइक उसके ऑलमोस्ट किसी भी सीजन से, स्पेशली लिवरपूल में जब He से है. can play in any team in the world. Any team in the world भाई. he can play. तो भाई If you're वो भी. that na top for me it's top 5. You're a top 5 player if you can play in any team in the world man. ट्रू ट्रू ट्रू. दैट्स क्रेजी. डॉबविक डॉबविक भी एग्जैक्टली. जिरोना की फिनिश अच्छी थी, वो पिचिची वगैरह जीता, तो दैट्स हाउ ही मेड इट. ट्रू. डॉबविक वाज आल्सो गुड. रॉड्री Hmm. वन बिकॉज ऑफ यूरोस. व्हाई डेला फुएंटे नॉट वन कोच ऑफ द ईयर? कोच ऑफ द ईयर कौन जीता? Ancelotti. भाई लाइक इट्स एंचेलोटी जीत गया. मतलब इसमें क्या है? व्हाई डेला फुएंटे नॉट? कुछ है ही नहीं. देयर इज नो मैथ टू इट. ये ऐसा If क्वेश्चन है कि there was a लाइक. checklist हम सब बोल सकते थे कि हाँ मतलब वाओ ये वही इसकी ऐसा. वजह से हुआ हाँ. but there is no checklist and आई हैव नो आइडिया भाई क्या yeah है look एग्जैक्टली. बस it's सही है. like I said when Salah is not here with 39 GA last season 39 GA वही क्रेजी. he's not top 30 player are you mad 39 GA last to last season 46 हम्म. 21 क्रेजी. 22 bhai the guy has 46 again bhai the guy has career seasons every year bhai एवरी ईयर. वही भाई. साड फॉर साला. एंड साले इज अफ्रीकन. अगर ये वो भी हो सकता है कि लाइक कि भाई वो अफ्रीकन है और रेसिज्म और वो, बट देयर इज वो कॉन्वर्सेशन है नहीं. आई डोंट थिंक सो इट्स देयर. every चौंकी भाई season लव्ड योर एल from क्लासिको रिएक्शन. थैंक्स अ लॉट भाई. चैट 600 लोग देख रहे गर्दन हैं. काटने आ गया था इसलिए उसकी। अरे हाँ भाई वो. भाई दैट आई डोंट नो व्हाई इट्स लाइक भाई आई नीड टू डू इट. आई नीड टू डू इट. बट चैट भाई, check out football with Daksh if you haven't. Top quality streams, top quality verbal ability, top quality of क्या बोलते हैं उसको, to हम्म। verbalize thoughts. I am not as good as this guy भाई. Go and subscribe, enjoy the content. That's where the juice is at. You need to do it. And especially क्योंकि especially भाई जो तुम में से, क्योंकि I know मेरी चैट पे ज्यादातर Madrid बारसा फैंस होते हैं भाई. check him out. अगर तुम्हें कोई चाहिए थर्ड पर्सन, ही इज एन आर्सेनल फैन, इनके ओपिनियंस अबाउट व्हाट ही लाइक अबाउट स्पेनिश फुटबॉल, मैड्रिड, बारसा, थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है. आई नो पीपल लाइक कि भाई थर्ड पर्सन क्या. अब मेरे से I मैड्रिड also have a फैंस soft पूछे, spot for दे Real हैव एन Madrid, आइडिया. so like keep that. But इसका ओए मतलब ये नहीं होल्ड कि ऑन बारसा होल्ड को ऑन हेट करते हो भाई you hate बारसा। ऑन माय चैट, ऑन माय लाइव स्ट्रीम. भाई ये क्या हो रहा है You hate भाई? बारसा तो बारसा को हेट करता है मेसी ने 4 गोल मारे थे ना तुम्हारे अगेंस्ट UCL में इसलिए भाई तब से you hate बारसा।
भाई ट्रू भाई अब I will also start hitting Mr. Daksh. I have to do it. You hate Barca. Daksh is Madridista. We have to do it, chat. वैसे मैंने देखा ही है कि आर्सेनल फैंस Arsenal and Barca is a very good mix usually exactly. plays. It's a good mix. I think it's because of Wenger or just in like stylistic दोनों Yeah, क्योंकि yeah. like उससे लेकिन हाँ. मेरे को जो वो कुछ सेक्शन है आर्सेनल फैंस का जो लाइक क्योंकि आर्सेनल हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंच प्लेयर्स एंड फ्रेंच प्लेयर्स आल्सो गो टू मैड्रिड अ लॉट आई थिंक वो भी एक कुछ पता नहीं इज देयर अ कनेक्शन देयर For me, it's nothing that complicated. Arsenal and Real Madrid were literally the first two teams in football I found out about through FIFA 2000. ठीक है? अच्छा फिर And that's it. Like literally, if I instead of when I was 6 years old, chat, अगर मैं आर्सेनल की जगह रियल मैड्रिड से खेलता, I would have been हाँ a Real Madrid fan today. That's it. ब्रो That's it. It was literally how I played a video game that made me an Arsenal fan and who I saw on TV उसके बाद. If I instead of Arsene Wenger and Arsenal, if I ended up seeing Real Madrid on TV somehow, I would have been a Madrid fan today. But कोई नहीं. I'm still happy with my choice, man. Chonky just saw Yash on a shady street with a couple of dolls and needles. Looks like भाई भाई चिंता मत करो भाई हम भी यहाँ से शुरू हो जाएंगे ऐसा कुछ होएगा ना Yeah. कवच लगा देंगे भाई थैंक्स गॉड विल यू डू मैन यू लाइव व्हाट इज कोई गेम है क्या आज कल है आज है नापोली एंड मिलान. हाँ दैट्स अ बैंगर गेम पर वो 1:30 1 बजे Yes. समथिंग लाइक दैट आज कुछ इतने क्रेजी गेम्स नहीं लेवरकुसन इज प्लेइंग एल्वर्सबर्ग आई डोंट इवन नो बट चैट भाई यू नीड टू सब्सक्राइब टू चोंकी वी आर वेरी क्लोज टू Mr. Daksh, I can't even believe it what I'm saying. 18 के. 18,000 subscribers, bhai. Let's go, This Chunky. this has to be the stream chat. This has to be the stream. Super close, Let's literally, go. bhai. 17,911 sub chat. Some of you guys इस chat में haven't sub. Do it and wait for videos. अब भाई कुछ Amorim की tactical analysis कर सकते हैं. We can do shit because we've been doing shit. But check out the content. Check out Mr. Daksh. The channel name is Football with Daksh. I always get it wrong. I got it right Thanks, this hero. time. Thanks. And Chonk, thanks a I'll lot for head now joining to the work, stream. okay? Exactly, I I'm have ending to the work. stream. You can leave. You can leave. Chal, thanks, hero. See you. Bye-bye. So chat, thanks a lot for joining. Ballon d'Or best streamer goes to. Why are we the best streamer in this 6 month period? Chat, are we up there? I think यश और मेरा हो रहा है क्या ये यश कौन फिनिश कर रहा है चैट फर्स्ट पे सेकंड पे Ciao Ciao is a song used against fascism. Bhai, we will fight fascism together, chat. Carlo managed 50 games. Oh, exactly, bhai. I agree, bhai. 50 games manage karna in 7 games. I think I agree, manage. We up, we up. Thanks a lot, chat. Bhai, I can't believe I love you guys. हम कल करेंगे stream. We'll be there again tomorrow. You know how we move. And तब तक के लिए वेट करना. Probably 31st we'll do a what is it called some भूत भात तो रेडी रहना भूत भात रिएक्शन डे और सब कुछ स्ट्रीम डे और वी आर देयर क्या काला जादू सच में होता है भाई बिल्कुल होता है आई बिन थोड़ा मेसिंग विद इट लेट्स सी इफ समथिंग हैपेंस बट थैंक्स अ लॉट भाई चैट मींस अ लॉट जलते हैं अगली स्ट्रीम पे और भूत भात के लिए रेडी रहना भाई चैट भूत भात इज रियल चैट भाई डर लग रहा है